Hindi film industry lost a veteran soul today, Satish Kaushik. Great father he is. He's a great father. The 66-year-old star was not just an actor. He was a writer, producer, director and a comedian who suffered a heart attack in New Delhi. He was last seen attending Javed Akhtar's Holi party on Wednesday. He got a breakthrough in the Hindi film industry in the year 1987 with the film Mr. India, which was a blockbuster where he played the character of a cook named Calendar. He directed films like Tere, Naam and Mujhe, Kuch, Kehna. Here are some of his movies we can remember him by. Satish Kaushik's last movie is going to be Kangana Ranaut's Emergency, which is currently under production. Here's how people reacted to his demise. मैं सतीश और अनिल हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में हैं, अनिल कपूर साहब। उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे। और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे। अगर मैं और अनिल साथ हैं तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते थे तो मेरी बुराई करते थे। और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे। उस दिन रात को फिर खाना खाया। कल फिर मेरी बात हुई थी। सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा। जानदार आदमी था वो उसके चेहरे पे कभी एक किस्म का फ्राउन या एक किस्म का कभी दुख कभी दर्द हमने देखा नहीं। वो हर टाइम एक्टिव, प्रोएक्टिव, एकदम जान के साथ हर वक्त एक्टिव रहने की कोशिश करता था वो। और पॉजिटिव बंदा था वो, बहुत ही पॉजिटिव था वो। कभी उसने अपने आप को हताश नहीं पाया। वो कॉन्फिडेंस देता था लोगों को पॉजिटिविटी की बातें करता था। और हर बार जब वो किसी नई फिल्म को करता था या नए प्ले को करता तो ऐसा लगता था कि अभी वो एनएसडी से पास करके दिल्ली से मुंबई आया है और वो अभी परफॉर्म करने वाला है। मेरा वेब सीरीज़ भी उसने किया, चार्टशीट। मेरे शोज़ में भी हमने काफ़ी काम किया सतीश के साथ। So it's a great loss. It's really a great loss to the industry. I don't know how the industry will face this great loss of Satish Kaushik. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.